हे एवरीवन, वेलकम टू कोड हार्मनी। आज हमारे साथ है साहिल सिंगला। साहिल सिंगला और मैं, हम दोनों ने ग्रेजुएशन साथ में ही करी थी। ग्रेजुएशन के बाद साहिल ने स्टार्टिंग किया एज अ टेस्टर एंड ही इज़ करंटली वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर 3। तो आज हम उनकी जर्नी के बारे में ही बात करेंगे, कैसे उन्होंने टेस्टर से डेवलपमेंट में शिफ्ट किया और अपनी करियर को इतना ग्रो किया कि वो अभी करंटली बढ़िया गूगल पे में डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है साहिल भाई, कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए आपका। Yeah, so hi everyone, welcome to Code Harmony and thank you Sahil for inviting me for this discussion. So college के बाद I joined Adobe as an intern, so not a development intern, that was in testing. So testing में मैंने 2 ढाई साल काम किया वहाँ पे। उसके बाद I realized कि I should switch my role and move to development. So I started learning DSA and like any other relevant things, and I switched to like I got an offer from Oyo as an SDE one. Then unfortunately, because of COVID and all, I got laid off from Oyo, and then like after 2 or 3 months, then I again like prepared for interviews, और फिर I got an offer from Wink Music, that is Airtel. So there, like actually, I started my journey as a developer because in Oyo I was in ramp up phase only. So after learning some development in like Wink Music, I started like preparing again after 2 years. I worked there for 2 years, and then like gave interviews for multiple companies, then got offers from Microsoft, Intuit, and Google. Then decided to join Google ultimately. So yeah, in Google also I made a switch internally. So earlier I was working for YouTube, YouTube Shopping specifically. Then joined GPay like 1.5 years back. Yeah, so that was an overview. तो जब से साहिल भाई ने गूगल पे ज्वाइन करी है, मैं तो गूगल पे यूज़ करता हूँ, पहले मैं फ़ोन पे यूज़ करता था। ठीक है। तो साहिल, आपके ये जो जर्नी रही है इसमें चैलेंजेस क्या फेस किए हैं आपने यार? क्योंकि हर किसी का जो करियर की स्टार्टिंग करता है उनको पता है कि डेवलपमेंट रोल में जाते हैं, थोड़ा पैसा वैसा है, थोड़ी ग्रोथ है और सीखने को मिलता है, तो दे आर मोर अलाइन टू द डेवलपमेंट रोल। बट अनफॉर्चुनेटली किसी को डेवलपमेंट रोल मिल नहीं पाता और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता डेवलपमेंट रोल से। बट कुछ लोग हैं जिनको डेवलपमेंट रोल से ही स्टार्टिंग करनी होती है, बट कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट अभी इतनी हो नहीं पाती, तो उनको कोई और रोल चूज़ करना पड़ जाता है, तो लेटर दे हैव टू मेक अ स्विच टू देयर डिज़ायर्ड रोल। तो उनके लिए क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं और क्या कुछ माइंडसेट रहता है, वो उस पर थोड़ा आप डिस्कशन कर सकते हैं। या सो मेरे टाइम पे भी अडोबी हमारे कॉलेज से बेसिकली डेवलपर्स हायर नहीं करती थी. सो दे यूज टू हायर टेस्टर्स ओनली. सो आई गोट लाइक ए टेस्टिंग रोल बिकॉज ऑफ दैट. सो टेस्टिंग में कुछ दिन काम करने के बाद समझ आया कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, बिकॉज एवरी डे आई यूज टू टेस्ट द सेम स्टफ अगेन एंड अगेन. So also I was part of a team that was that used to develop some internal tools for the for the teams, like not the ultimate like Adobe Acrobat product. I was part of the Acrobat team, but some internal tooling, some dashboards, some internal websites I used to develop. So that's where I got to know like I should switch roles and I should move to development. So yeah, I started preparing. So at like 2 3 years of experience, uh, companies generally DSA ही पूछती हैं. So I prepared DSA like dedicatedly, and then gave interviews and got an offer from Oyo. But actual journey जब start हुई as a developer, then I got to know like it's not that easy. Like developing internal tools versus developing the actual product, it's very different. राइट, राइट। So there were many challenges. So I had to start from zero. That was I had to start from scratch. So it's not like you make a switch, so your experience will not be of any use in that case, करेक्ट, करेक्ट। like the testing experience or like internal development experience. So yeah, it was quite difficult at start, but yeah, like मन में ये सोच के ही जाना पड़ेगा नेक्स्ट रोल में कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड you have to put a lot of effort.
it's not like it's impossible. You can do it, but yeah, you have to put a lot of effort. That's the thing. यार डेफिनेटली लाइक आजकल तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और Right. ब्रो आपने लाइक इफ़ यू वांटेड टू स्विच टू डेवलपमेंट रोल व्हाई डिडंट यू ट्राई इंटरनली इन द अडोबी एट द टाइम, और आपने किया था ट्राई? Yeah, internally they were asking me like to give interviews and then decide like you can choose some team internally also. But at that time, I thought like I should join a startup like Oyo and learn things from scratch, learn things in a fast-paced environment. Because at Adobe things are very slow. It's not that fast, right? So और that's why I decided to join Oyo. स्टार्टअप में कल्चर में काम करने को, थोड़ा लार्ज स्केल पे एप्लीकेशन हैंडल करने को मिलते हैं, तो काम भी थोड़ा ज़्यादा सीखने को मिलता है। और अर्ली स्टेजेस में तो इतनी टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए ना, स्टेबिलिटी और Right, right. वो ये सब चीज़ होगी। तो ओयो में तो मतलब काफी अनऑर्गेनाइज्ड है वैसे, मतलब इट्स नॉट लाइक देयर इज प्रॉपर प्लानिंग एंड ऑल, यू आर जस्ट गिवन ए फीचर एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट। सो मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा ओयो का, अल्टीमेटली मैं वहां से ले ऑफ भी हुआ, बट ठीक है, दैट वाज ए लर्निंग। या डेफिनेटली। तो ब्रो आपकी लाइफ में चेंजेस क्या है, मतलब ये जो रोल चेंजेस किए हैं आपने, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज किया, तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आपने फेस किए इन सब रोल्स को लेके, एंड हाउ इज़ योर लाइफ नाउ? फर्स्ट अडोबी से जब मैं ओयो गया, सो दैट लाइक दैट वाज अ बिग कल्चरल शॉक। इन अडोबी इट्स वेरी गुड वर्क कल्चर, बट इट ओयो I will not suggest anyone to join that company. Also, like in my case, that was a role change, right? From testing to development. So that राइट। was also a big change, and I had to learn a lot of things from scratch that I was not even aware before that. Yeah, these were the two things I think. Apart from that, no significant changes. It's just that I had to shift a city, like from Noida to Gurgaon. That was not a big deal at that time because I was a bachelor. और आजकल तो ये भी सुनने को मिलता है ना कि टेस्टिंग रोल्स भी कम हो रहे हैं, क्योंकि यूनिफाइड इंजीनियरिंग रोल्स हैं हमारे पास, कि कोई डेवलपर आ रहा है तो उसी को मेंटेन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो मेंटेन करेगा, टेस्टिंग डेवलपमेंट सब कुछ उसको टेक केयर करना पड़ेगा। तो इसके बारे में क्या आइडिया है आपका, कि मतलब क्या आपको लगता है कि आगे जाके टेस्टिंग वेस्टिंग वाले रोल रहने ही नहीं वाले? नहीं, ऐसा नहीं है। टेस्टिंग इज मैंडेटरी एट सम पॉइंट बिकॉज यू कांट टेस्ट एवरीथिंग यूजिंग कोड. Today we write unit tests, integration tests, but still we need some touch of manual testing ultimately before the product is delivered. Yeah, there are less testing roles, but we can't deprecate that at all. Like it's not like there will not be any roles in future. Maybe developers will have to learn the testing skills, but testing should be done, right? There may be a time when like original testing roles will be deprecated, but uh, ultimately someone will do the testing. Maybe developers will do the testing on their own. Or sometime to save the developers time, we hand over to some other dedicated test engineers, so that they Yeah, will do so the testing with the. only companies are hiring vendors nowadays for that thing. Like they just like some two, 1 or 2 person in a team to just for the testing, and core developers are working on the development thing. और अगर हमने कुछ डेवलप किया है तो कोई दूसरा बंदा कर रहा है तो फ्रेश माइंड से ही टेस्ट कर रहा होगा ना, तो वो भी सही रहता है थोड़ा स्क्रैच से। हाँ, ये भी एक होता है, मतलब जनरली जो भी डेवलप करता है उसको लगता है कि माई कोड इज वर्किंग फाइन, मेरा कोड सही है, उसको कोई उसमें बग्स नहीं दिखते हैं। बट कोई एक फ्रेश माइंड उसको टेस्ट करता है, तो देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग बग्स, राइट मतलब। राइट। तो ब्रो आपकी जो प्रिपरेशन का क्या रोड मैप था उस टाइम पे आपका, और क्या कुछ आपने किया ये डेवलपमेंट, बिकॉज अल्टीमेटली वी नो दैट वन वर्ड DSA वी हैव टू डू, बट एक्चुअली में क्या किया ऑन अ वेरी ब्रॉडर लेवल? एक्चुअली मैं पहले तो बेसिकली जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको थोड़ा रिवाइज किया। व्हाट ऑल डेटा स्ट्रक्चर्स आर देयर, व्हाट ऑल दे डू, इन व्हाट सिनेरियोज वी कैन यूज दोज डेटा स्ट्रक्चर्स। Then I started practicing problems on lead code and interview bit. So interview bit में भी multiple sections बने हुए हैं. Like these are the array problems, these are the linked list problems. But in lead code, there is a mix of all the problems. It's not like there is a different section for different problems. So lead code पे I've started practicing problems. So I used to practice on weekends.
or Hmm. on weekdays also, like not more, but one problem a day, something like that. So yeah, I think first learn the concepts and then practice. These are the two things we have to do. Right. Building concept is very important. Like directly Building a jumping habit to is the very problem. important. Don't jump into the practice part directly. Right, right. Otherwise, that way we'll cram only, will not learn. और उस टाइम पे जो इंटरव्यूट वाला सेक्शन आया था वो तो क्वाइट फेमस था ना, जब नया नया ही आया था इंटरव्यूट और हाँ, उन्होंने। उस टाइम पे इंटरव्यू में नया नया था, आई थिंक इट इज 2019। राइट, तो राइट। उस टाइम पे लीड कोड, उस टाइम पे मैंने इंटरव्यू भी किया था, बट लेटर इन लाइक इन अदर स्विचेस फ्रॉम ओयो टू विंग, विंग टू गूगल, आई मेरे को याद प्रिपेयर्ड है ऑन मेरे को लीड याद है कोड। मैंने भी इंटरव्यू भी किया था और मैंने तुमसे ही गाइडेंस ली थी, मतलब ब्रो ने पहले स्टार्ट कर दिया था कोडिंग वोडिंग करना। बाद में मेरे को, बिकॉज मेरी लाइफ भी बहुत चिल चल रही थी एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो लेटर बाद में पता लगा कि भाई लिंक्डइन पे पता लगता है बंदों ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन कर लिया, तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो फिर बाद में मैंने हाँ, भी यही स्टार्ट किया था। कंपैरिजन। हाँ। लेकिन आजकल तो इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मतलब उस टाइम पे था कंपैरिजन वाला फैक्टर, बट अब नहीं है, मतलब हम्म। आई गेस। आजकल थोड़ा कंपटीशन भी ज़्यादा चल रहा है और एक ये वाली बात भी है ना कि स्टार्टिंग में जब हम करियर की स्टार्टिंग करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो अभी फ्रेशर रोल्स हैं वो थोड़े लिमिटेड है। कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट करती है, ठीक है, मिल जाता है, बट दोज हु आर लुकिंग फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स उनके लिए अभी भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनको। तो स्टार्टिंग में अगर रोल नहीं भी मिल रहा तो एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट विथ सम विथ एनी काइंड ऑफ रोल, बट कीप ऑन डूइंग योर प्रिपरेशन इन पैरेलल। वो कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ब्रो तुम्हारी तरफ से मतलब जो बिल्कुल की टेक अवेज होंगे जो बंदे अभी ट्रांजिशन के लिए सोच रहे हैं या फिर अपने करियर में जंप लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए क्या की टेक अवेज रहेंगे आपकी तरफ से? आजकल सिनेरियो काफ़ी बदल गया है, मतलब उस टाइम पे तो डीएसए वो सफिशिएंट, बट अब आई थिंक कि डीएसए के साथ साथ सिस्टम डिज़ाइन इज़ ए मस्ट। मतलब SD1 रोल्स पे भी सिस्टम डिज़ाइन पूछने लग गए हैं अब। और प्रीवियस एक्सपीरियंस में भी क्या कर रहे हो, कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट किया है नहीं किया है। सो ऑल दोज थिंग्स मैटर नाउ इट इज, एंड रोल्स आर ऑल्सो वेरी लो। लाइक इट्स नॉट लाइक देर आर मल्टीपल ओपनिंग्स, but there are a राइट, handful of openings in companies. So that way, like it's little competitive nowadays. But ultimately, you should build core, like core concept should be clear, like DSA, some design राइट, concepts, and you should work on some like one or two projects that are little challenging, or maybe like any kind of projects you can work on. But राइट, some hands-on experience would be there. राइट, राइट। जस्ट टू समराइज, अपने को 3 फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है: डीएसए, डिज़ाइन, और वो भी आजकल नया चल रहा है बिहेवियल काइंड ऑफ थिंग। तो बिहेवियल काइंड ऑफ थिंग वो तो तुम्हें डेवलप कर लोगे, बट डिज़ाइनिंग में डोंट वरी अबाउट दैट। फॉर फ्रेशर्स इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दे नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइनिंग। तो Right. वो अपना हो जाता है Like, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव it's सब। not like they want you to design end-to-end systems, but on an overview, like overview of design concept should be, you should be aware of. राइट, राइट। और उसके बाद डीएसए इज़ द ओनली मेन थिंग दैट यू हैव टू डू, Right. जिसमें Right. और ये है ना, डीएसए एक सब्जेक्ट नहीं है, मतलब इट्स लाइक ए स्किल सेट यू डेवलप ओवर टाइम। तो जो टाइम जो तुम देते हो, कंसिस्टेंसी, वो इम्पोर्टेंट है। राइट। तो ब्रो अभी कैसी चल रही है लाइफ गूगल में? Google में सो ब्रो डू यू फील दैट दिस इज द थ्रेशोल्ड दैट यू हैव अचीव्ड एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू अचीव आफ्टर दिस? no, no, it's not like that. But मतलब लाइफ उतनी चिल नहीं है जितना लगता है कि गूगल में चले जाएंगे तो लाइफ चिल हो जाएगी। इट्स द बेस्ट कंपनी टू वर्क फॉर। ठीक है, देर आर पर्क्स, बट देर आर challenges also. You are working for a well-reputed company, then you have to work like a robot. Like there should not be any errors. There should not be any bugs. You have to work like a like very professionally, right? राइट, राइट। And because it's a very big company, so things are very slow also. Like every small change requires a rigorous review. So these kind of challenges are there, and it's highly team dependent also, because in my previous team, like things were very slow. Like before last 6 months, we were discussing designs also, designs only. Like ओके। we did not have a roadmap at all, like what to do.
why to अच्छा. do. So that's why I was frustrated and I had to switch at that time. Hmm. So I switched to GPay then. What are your current tech stack? So right now I'm like we work on Java only, like in backend preferably on Java, Hmm. and in front end I'm not sure. Like I have never worked on front end part. Yeah. So one more thing, like Google is not the ultimate goal. It's not like if you reach here, that's the destination. Hmm. You will not have to put any efforts after that. Look for roles where you belong. It's not like Google is the best company to work for. I will join that company only. It's not like that. Look for like roles where you belong, where you think your work-life balance is good, where you find peace, where you enjoy working. Yeah. So don't just think like don't just aim for the best. Hmm. Aim In for the aim for companies which are best for you. in short, like we should not target on any specific companies or any specific roles. So it's Right. totally up to us. Like जहाँ पे अपना fit हो रहा है वहीं पे अपना fit हो जाओ बस. और Yeah. Find your fit हाँ, basically. यही है. ठीक है ब्रो. तुम्हारी जर्नी तो बड़ी बढ़िया थी यार. मतलब अब हर किसी का रोल, हर किसी का ड्रीम होता है ना कि मतलब स्टार्ट करना किसी अच्छी कंपनी से, और अल्टीमेटली सबका मन करता है कि गूगल में ही पहुंचना है. कोई और कुछ नाम तो याद आता नहीं है, स्पेशली इन इंडिया. रैंक 1 इज स्टिल होल्ड बाय गूगल. तो यही रहता है. तो बाकी मेरी तरफ से भी यही है गाइडेंस सबको कि मतलब अपना स्टार्टिंग, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो करियर की, पहला दूसरा साल है, तो अपना बस अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए. और अगर एक्सपीरियंसड हो तो तो भी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए. तो और कुछ Right. है नहीं ऐसा. ठीक है ब्रो. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी. बड़ी इंस्पायरिंग थी. आई होप के व्यूअर्स को भी कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी तुम्हारी जर्नी से. ठीक है ब्रो. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. ओके. Thank you for inviting me. It was fun discussing things. थैंक्स ब्रो. लाइक होप वी विल जस्ट कम अगेन ऑन दिस चैनल आफ्टर सम टाइम. Sure. ठीक है ब्रो. बाय बाय. Bye.